मैं हूँ आकांक्षा नामा और अलाइनमेंट टॉक्स में आज हम बहुत ही मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम डिकोड करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी, स्टार्टअप हो या फैमिली बिजनेस। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस गरिमा जाजू, जिन्होंने कॉरपोरेट लीडरशिप, पीपल डेवलपमेंट और एचआर स्ट्रेटजीज और सोशल इनिशिएटिव्स में एक लंबे टाइम से काम किया है, जिनका बिलीव है एक स्ट्रॉन्ग कल्चर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता बल्कि एक इंस्टीट्यूशन को फ्रेम करता है। और आज हम इसी विजडम को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं गरिमा जी से। Oh my God, so many things are going on here, and you are taking care of what? So I am the CHRO of the entire group. So I take care of my people and make sure that they're upskilling every day. So that's my job. Okay, that's too great. And one thing, when I met you first, we met in a post training classroom. The day when I saw you, like we talk about the value and the cultures, and you explained the culture and value part very well. So आज की डिस्कशन में हम वैल्यू एंड कल्चर को हाईलाइट करने वाले हैं बिकॉज मैनेजिंग so many organizations and the people with the core values, with the culture, none of the other can explain better than you because you handle so many things together. सबसे पहले we want to start with your professional journey. What framed you to think about this? How you started? So, I mean, since this is a family run business, so I got into JK Jajoo Ventures through that way. And I was just very drawn to the HR vertical because I think I'm someone who personally loves to connect with people, loves to help them, loves to contribute to their lives. And that is what the organization also stands for. So it was a pretty easy job for me to sort of understand the value system and then build further on it. So that. Oh, so these values were already there, Yes. and you nurture these values and you carry forward it. Absolutely. That's great. Yeah. So, आपके हिसाब से कल्चर का ट्रू मीनिंग क्या होता है? तो मेरे लिए कल्चर लोग अक्सर समझते हैं कि ऑफिस में कैसा माहौल है, कितने कलरफुल प्लकार्ड्स हैं, फोटोज हैं। ऑफ कोर्स ये सब कल्चर का एक पार्ट है, बट आई थिंक द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कल्चर स्टार्ट्स व्हेन द पर्सन इज नॉट इन ऑफिस। हाउ दैट मेक्स यू फील कि आप ऑफिस से घर जा रहे हो या घर से ऑफिस आ रहे हो, तब आप क्या महसूस करते हो ना, दैट डिफाइंस योर कल्चर इन द ट्रू सेंस। अगर मैं ऑफिस से घर जाते समय खुश हूँ एंड आई एम हैप्पी विद द वर्क आई डिड, आई नो माई बॉसेज हैव अप्रिशिएटेड माई वर्क, if I have fumbled anywhere, they've, instead of shouting at me or raising their voice at me, they've rather held my hand and made sure I do it properly. So it gives you that sense of satisfaction, that sense of fulfillment. So how your workplace makes you feel outside of office, I think that is what really culture is. If I'm excited to wake up and go to office, it means I have a good culture. Fabulous thought you have on culture. That's amazing. When somebody joins your organization, so how you make sure जो first hire है आपके यहाँ पर when they are coming, the things what you make sure that should be followed. सो आई थिंक हमारा जो हायरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई वुड से। तो इससे पहले कि हमारे से कोई वन ऑन वन भी मिलता है, उससे पहले हम उनको एक बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म भेजते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फिल ऑल्सो, एंड सम इवन फाइंड इट अ लिटिल लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फिल इट। तो हमारा फर्स्ट फिल्टर तो वहीं पता चल जाता है कि कौन कितना कमिटेड है. So if you are willing to fill that 9-page long form,
Oh my before God. you are even meeting us. It shows, and then the way that you're feeling it also speaks volumes about how you are as a person. So which makes our job very easy. तो जब तक फर्स्ट इंटरव्यू के लिए इंसान आता है तो हमें उसके बारे में ऑलरेडी सब पता होता है, उसके राइटिंग स्टाइल से भी बहुत चीजें इन्फर कर पाते हैं. देन इंटरव्यू होता है. सो इन इंटरव्यूज ऑल्सो वी मेक श्योर वी हैव a certain set questions wherein we can judge the person on their core values. Next, when they finally come on board, they are not just taken into the organization. आप फर्स्ट डे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो हम आपको आपके डेस्क पे नहीं लेके जाते. For the next 7 days, you are going straight to the induction room and going back home from there. And there is a 7 day long extensive induction जो हम सबका कराते हैं. उसमें there are various things that the person covers. उनको हम हमारी organization के बारे में deeply समझाते हैं, how we are working, what sort of a culture we are building, what we expect them to contribute to in the culture, हम कैसे काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन काम करने वाला है. इररिस्पेक्टिव अगर कोई एचआर में भी ज्वाइन कर रहा है तो हम उसकी मीटिंग हमारे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से भी कराएंगे. कोई आर्किटेक्ट में ज्वाइन कर रहा है तो उसकी मीटिंग हमारे सेल्स वाले हेड से भी कराएंगे, सो दैट एवरीबडी शुड नो. Because ultimately for us culture is very important and it cannot be built in silos for different teams. It has to come together. So that happens. Then they go on a tour of Jaipur to understand the city, to understand the culture of the city also. Great. And how, we have inherited that in some sort of sense. So a lot and lot of focus is placed on our core values, because I think that is the one thing that really defines who we are. So that's how we do it. Okay, and you just said core values. So, how you implant these core values in your all the joiners, all the people in your organization? So I think before I get to that, one thing that I would want to share also is कि ये 5 core values कोई random words नहीं है जो हमें अच्छे लगे and हमने उठा के हर जगह ब्रांड कर दिए. इनके पीछे अराउंड 100+ आवर्स की वर्किंग थी, जहाँ सुबह से शाम किसी ने बोर्ड में और नहीं, कुछ भी नहीं किया. सब काम छोड़ के सिर्फ ये डिसाइड किया कि वो 5 कौन से शब्द होंगे जो हमें गाइड करेंगे. Of course, as being very ethical people in nature, and पहले भी जो businesses रहे हैं उनमें ethical ही थे, but still उस pool में से 5 word उठा के लेके आना कि हाँ ये 5 will be our boundary. So a lot of emphasis was paid to that work as well. फिर जब भी कोई आता है, as I said, in induction it is repeated every day. It is repeated every time anybody is talking. It is repeated. Anything that you're watching anyone do, everyone, whoever's a part of the organization, is definitely following this. If there is someone who doesn't follow it, that person is no longer a part of the organization. It's that simple for us. It's like black and white. There's no gray. So आप किसी को काम करते हुए देख रहे हो तो भी आप सीख रहे हो. इंटरेस्टिंगली वी आर वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सब अवार्ड्स नहीं हैं. हम लोग सिर्फ कोर वैल्यू अवार्ड्स पे ही काम करते हैं. Oh, how it works? सो एवरी क्वार्टर वी हैव आवर टाउन हॉल, जहाँ पे हमारी सारी टीम 300 के 300 लोग इकट्ठा होते हैं. एंड उस टाउन हॉल में हमारे चेयरमैन सर आके हमें सबको एड्रेस भी करते हैं. वहाँ पे सबको ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स दी जाती है सीईओ के थ्रू. सो एवरीवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम knows that how much the company has earned or lost this quarter. तो हमारे गार्ड से लेके, ड्राइवर से लेके, ऑफिस बॉय से लेके टॉप मैनेजर्स एंड लीडरशिप तक हर एक इंसान को पता होता है कि इस क्वार्टर में कितना कमाया है या कितना घाटा हुआ है. So transparency is there. So people start trusting you with that. And then they want to follow what you tell them. And then we have a big session on core values every town hall, wherein people are encouraged कि इनको फॉलो करो. क्यों करोगे? आपके बच्चे आपसे सीखेंगे.
how it can help you in your personal life also. And then we end it with the core value awards, wherein people, you will find QR scanners across our offices and sites, and people can scan it and either self nominate themselves, और या फिर कोई और उनको nominate कर सकता है for any core value display. सो जैसे अगर किसी ने ये वेस्ट अक्रेलिक बोर्ड्स का पीछे हटा के व्हाइट बोर्ड बना के काम करना शुरू कर दिया, या कोई एब्सोल्युटली पेपरलेस चला गया, कोई क्लाइंट साइट पे आया था और पर्स छोड़ गया, लेकिन टीम मेड श्योर कि हाथों हाथ उनके घर जाके उसको वो वापस से पर्स दे दिया जाए. Numerous stories, whether big or small, each one is appreciated. And then the best out of them are taken out and awarded in front of everyone. Even अगर कोई core value display हुआ है, so we have a family WhatsApp group, because here at JK Jajoo Ventures we don't use any other term, हम परिवार है, so it's a family WhatsApp group. तो हम उस पे भी पोस्ट डालते हैं for recognition of core values. So I think that really helps to sort of put it down deep into their DNA कि this is what it is. And आप किसी से भी ऑफिस में बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये सब एक जैसा बोलते हैं, क्योंकि एक जैसा सोचते हैं. Correct. Yes. Amazing. Like it feel like it's a true chapter of HR book I am reading today, and it's fantastic. And please nominate your guard I met today in your parking area. So I'm nominating. You said anyone can Absolutely. nominate you. I'm nominating him for this award How of sweet. core values. 100%. Thank you so much. Yes. When you start, what practical step you take first whenever someone joins you? A simple these are the practical things you actually need to follow, and you will judge within a week or something. In a very short time you will judge, no, this person is going far with us. So it's honestly not that tough. किसी के बारे में इतना समझना कि क्या वो आपकी वैल्यूज से अलाइन है या नहीं, बहुत समय नहीं लगता है. एंड हम जज कर पाते हैं उससे पहले वो खुद इंसान जज कर लेता है कि यहाँ वो फिट हो ही नहीं पाता. जो इन कोर वैल्यूज जिसके अंदर खुद से नहीं है ना, वो ऑनेस्टली इस कल्चर में फिट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यू ओनली फील कंफर्टेबल इन एन एनवायरनमेंट दैट feels familiar to you, right? तो अगर कोई ऐसा आता है तो हम उसको कुछ बोले उससे पहले कि वो अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाते हैं लोग मोस्टली. एंड इट्स रियली नॉट दैट हार्ड टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि ये मेरी कोर वैल्यूज से अलाइन करता है या नहीं करता है, बिकॉज कोर वैल्यू एक ऐसी चीज है जो झलकने के लिए ना आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है. स्मॉल थिंग्स, वेदर यू आर डिसिप्लिन, अगर आपका टीम का हडल है, आप टाइम पे आ रहे हो क्या, आप टाइम पे जा रहे हो क्या, आप अपनी मीटिंग्स कैसे कर रहे हो, जो आपके डिलीवरेबल्स हैं आप उस पर कैसे कर रहे हो, आप लोगों से बात कैसे कर रहे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इज योर बिहेवियर चेंजिंग और डू यू हैव द सेम सॉर्ट ऑफ रिगार्ड फॉर एवरीवन. देयर आर न्यूमरस थिंग्स व्हिच may feel very oblivious, but I think they're very easy to notice as well. आप कितना appreciate कर रहे हो अपने लोगों को. So all of that really helps us clear it out. And can we recall these or 5 core values? So we call it the spine: spreading happiness, being positive, innovative, putting ethics first, and nature friendly. Oh, great. Yes. So I like all your 5 core values. These are amazing. I guess our complete Indian culture we follow, somewhere these core values are there in our roots. Absolutely. But in a modern way, I think we have forgotten and we are not following these steps, and that's why all the problems starts. And I think one of the main point of making sure that this is on display and everywhere is that you don't forget. That's वरना आप काम की भागदौड़ में कभी हो सकता है कि गलती से मिस कर जाओ, तो हम चाहते नहीं है कि आप गलती से भी मिस कर जाओ. So we want it to be there in front of you. You'll find it on every desk, every PPT, everywhere you'll find it in all our organizations, in all our offices, in all our sites.
Mhm. you will have these. कुछ और Amazing. होना हो ये तो पक्का छपा हुआ मिलेगा. So, have you ever noticed like uh, the people not following the values or culture, anything going wrong? How you correct it? So I think going wrong नहीं मैं उसको बोलूँगी, but of course one of the most important things that we do as an organization is, and as leaders, is that we listen to Mhm. what our people have to say. So and you know, culture is something that evolves over a period of time, and it keeps getting better if you work towards that. So there have been numerous instances where we have got feedbacks from our people about things that they want in a certain way, and we've heard them and we've done that. To give you a few examples, the uniform that I'm wearing, 2 years back, this would have a tie, but our people said that, you know, we don't want a tie anymore and we feel more comfortable without the tie. Mhm. So the leadership listened and the tie was removed from the uniform. Mhm. Then we realized that, you know, there are a lot of mothers coming in into the organization, and it will be more convenient for them if we have a crutch in the office itself to just give them that sort of comfort. So we listened to that and we opened a crutch in our office Oh, itself. great. We have a crash here, Yes. right? Oh. Then रिक्वेस्ट आई कि यू नो हमें सैटरडे ऑफ चाहिए. हमने Mhm. कहा ठीक है, कर Uh-huh. लेते हैं. सो हमने सेकंड सैटरडे ऑफ कर दिया. फिर Mhm. रिक्वेस्ट आई कि नहीं, शायद 2 सैटरडे ऑफ चाहिए और सेकंड नहीं चाहिए, आप फर्स्ट एंड थर्ड कर दो ताकि बैंक के काम कर लें. वी सेड Mhm. ओके. And now we are one of the very few organizations Mhm. in Rajasthan for sure जिनका रियल एस्टेट में होते हुए फर्स्ट और थर्ड सैटरडे ऑफ होता है. Oh, great. Similarly, you know, like small things also, कि अगर हमने जो हमारी चाय की मशीन थी उसमें लोगों को चाय पसंद नहीं है, they wanted a freshly brewed tea. Hmm. तो ठीक है, अगले दिन से there were glasses, there was one person, there was one चाय का pot, and freshly brewed tea started happening. People wanted more recreational things, so we got them uh, matches, and then table tennis came in, chess came in, carom came in. So you know, I think it's the easiest way to improve, that you just listen. Now, Listen to what your people say. great, nice. अभी इसको सुनने के बाद people will be coming with more ideas कि ma'am is will do. So we have that. So every quarter we also have this meeting that we call Shubhashish Vijay Sabha and VKJ Vijay Sabha, wherein our top line of leadership and their second in commands. So it's a full day meeting that we do, and a part of it is that what do you suggest, how we can improve our culture. So there is, मतलब सब बैठ के उस पे मंथन करते हैं बकायदा हर क्वार्टर रिपीटेडली, कि कल्चर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बेटर कैसे कर सकते हैं. Great. So of course customer experience gets talked about, but we make sure our employees don't get undervalued. Undervalued. So we take them at par. Great. Yeah. And I think this is the thing कि जब whenever you do start something new, वो सबसे पहले घर से शुरू होता है. When your home is happy, then whatever whosoever is coming in your home, they will be happy. Absolutely. अब चाहे से आपका client आ रहा है, customer आ रहा है, enable, they feel happy. Yes. So actually, you know, our company motto is also a saying by our chairman only, that give your customer so much service that they feel guilty even thinking about doing business with anyone else. And when I say customer, for us, our customers are not just people who will buy homes from us or, you know, use our services at the airport. For us, the customer word has more definitions. It is our employees, because they're working for us, they're our customers. Our vendors are also our customers. So we like, so everyone who has an interaction with us in any whatever way, they all are our customers, and our first thing that we want to do for them is customer delight. हमें उनको delightful experience देना है, satisfactory या happy नहीं, delightful. Great. So that's what we aim for. Amazingly. So, JKJ airports and Subhashi's homes, you people are doing so many things. Now,
talk about the leaderships, how they think, so we can manage this whole cultural thing and value thing in people. What are the thought process of your all leaders? So I think this is going to sound a little repetitive, but I'm very happy about it that हम सब जितने भी हमारे टॉप लीडरशिप है वो सिर्फ इसके बारे में ही सोचते हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं. And I think that has made our life very simple, and it's the easiest way to move forward. Of course, it's difficult to actually practice them, because at every step you want to be very conscious about it, very sure about it कि आप इन 5 core values से बाहर नहीं जा रहे. And that is how they lead. Other than that, I think our office culture is also very open. So people are free to interact with the leaders, the board, and the people. It's not like कि, oh, appointment लेना पड़ेगा फिर ही मिलेंगे या अभी तो नहीं मिलेंगे, whatever. Anybody can just walk in and knock and be like, do you have a minute? I need to speak to you, irrespective of at whatever level they are. So I think that also really helps with the thought process, because everyone is aware of what is going on in the organization. It's not like कि हम position wise ऊपर हैं तो बाकी सब चीज़ों से cut off है. ऐसा कुछ भी नहीं है. It is truly a family, as I said. मतलब यहाँ पे the bonding is so strong that everyone is acting like a brother or a sister or a elder, guardian or a parent. So सारा माहौल वैसा ही है, and that's how people even think. So the leaders think of their team as their children. तो आप अपने बच्चे के लिए तो कभी बुरा चाहोगे ही नहीं, उसको डांटोगे लेकिन प्यार तो फिर भी सबसे ज्यादा ही करोगे. So that is how we are nurturing our people in the organization. Oh, great. So one of your value is like innovation, innovative. So how you cater that? Like what innovations are happening? Like how you catch that? So we are actually very innovative, and especially in our real estate vertical, we have been awarded also a lot of times because of this, and by Great Place to Work as well. So when we are developing our projects also, we make sure we're very conscious about innovation. So we are one of the very few projects who've got EV charging points for all the cars. Oh. So of course that has a additional cost to it. It's very expensive because आपको load उस हिसाब से खरीदना पड़ता है. But we know that this is the future, right? Everybody is going to end up owning an EV. That's where it comes in. We've got smart water meters, wherein you don't get वो मीटर से बिल कि कोई घर में रह रहा है नहीं रह रहा तो भी इक्वली बढ़ जाता है. आप it's like a prepaid phone. तो जितना पैसा आप डालोगे उतना पानी आएगा, पैसा नहीं डालोगे तो पानी नहीं आएगा. So we got that developed, and now we've initiated that in our projects. Even when I talk about office, there are small things that are happening and people are doing it differently. Whether it be say how we want to maintain our task sheet, how we want to maintain our promise actions. So like there are small things that people are doing that is actually creating a bigger result. कि आप किस चीज को कैसे लिखोगे, कैसे यूज करोगे, उसको रिसाइकिल कैसे कर सकते हो, कहाँ इनोवेशन वहां लगा सकते हो. मे बी कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जिसकी वजह से टाइम कम लगेगा एंड आउटपुट बेटर आएगा. So I mean I can actually go on and give you many more examples, but I think that will cover a lot of your time. But there's a lot of that happening. And one more thing I saw that nature loving. So for what you do for nature? So again, we are very conscious. हमारे, of course, at the airports, so it's mandatory also. All the vehicles are definitely electric vehicles. At our real estate projects, we have separated garbage chutes. उनका e-waste recycling होता है. STP plant है. We have the most green areas. We do a lot of plantation. हमारे हर project पे आपको minimum 50,000 trees दिखेंगे. Great. So it's lush green. Even in office, we are very conscious. We don't use any sort of plastic.
bottles, we are very conscious about that. हम paperless जा रहे हैं. A lot of our departments have already gone absolutely paperless. Only जहाँ पे need है अभी भी सिर्फ वहाँ, जैसे अगर लीगल में कुछ सबमिट होना है और वो फाइल में लग कर ही जाएगा तो वहाँ प्रिंट हो रहा है पेपर, but otherwise we are absolutely going digital. So that's, you know, those little things. अगर लाइट ऑन है so consciously लोग जाके उसको ऑफ कर देंगे, जलता नहीं छोड़ेंगे. हर जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. So numerous things, big and small, that are, you know, taken care of to make sure that at least हम अपनी तरफ से नेचर को जितना बेटर कर सकते हैं उतना करें. That's amazing. Very nice. Like every time I think I'm interacting with you, I think the more chapters of the management books are opening, and that's great. So one more value you have, that is positive thinking. But when people are moving, रोज काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, they have a certain pressure on them. It's not important कि every time they feel positive, but what make them positive in your environment, that I could see with your values, that obviously they will be positive if they have such a great values in the culture, in the environment. But then too, positive रहना हर समय it's not possible. So what you say to your people when they feel down? So I think feel down वाला situation ना आए उसके बारे में भी काफी बात होती है. Like our chairman always says that, you know, you should always be complete with everything. कि अगर आप घर पे हो, so make sure you're complete with your parents, make sure you're complete with your wife, with your kids, with your siblings, with your in-laws, everyone. तो अगर वहाँ पे कुछ wrong हो रहा है तो उसको correct करके ऑफिस आओ, तो fresh mind से आओगे. अगर वहाँ की कोई टेंशन है जो कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फिर ऑफिस में भी दिन बुरा ही जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता. So you have to complete everything. Then when the person comes to office, all our teams have a daily huddle, a standing huddle, where the team just comes together for 5 minutes. Everybody tells them what their promised actions are for the day, how they're going to do it, and if they're having any stucks. So I think that also really sets the tone for the day. And just coming together of people, I think that really uplifts the energy. अगर फिर भी कोई है ऐसा जिसको थोड़ा डाउन फील हो रहा है या मोटिवेटेड फील हो रहा है, सो ऑफ कोर्स एज आई सेड, ये इतना फैमिली वाला एनवायरनमेंट है कि एचआर को तो बहुत बाद में एज एचआर घुसना पड़ता है कि यू नो, ओके, आई एम हियर फॉर यू. एवरीबडी नोज दे आर हियर फॉर देम. बट आई थिंक वो टीम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अगर आज मेरा भाई मेरे से उदास है तो मैं नहीं देख पाऊंगी ना. मेरे को लगेगा कि यार मैं इसकी हेल्प कैसे कर पाऊँ, मैं इसके लिए क्या करूँ जो ये खुश हो जाए. And I think one more thing that is common in the organization is appreciation for people. That really matters. So if you feel truly acknowledged and truly appreciated for what you've done and contributed, I think it automatically gives you a positive mindset. So we make sure that everyone from top to bottom gets acknowledged, gets appreciated for what they're contributing to the organization. Perfect. Great. I think this builds the next value, ethics first. Yes. So I guess the ethics you follow. So, and you call it in the organization that sees in their work. And if you define how you will define the major ethics. So I think ethics is definitely integrity, your honesty, how you're respecting people, how much pride you're taking in what you're doing, what sort of camaraderie you're sharing with your people. I think all of that comes under ethics. It's such a big, you know, like it's a small word but has a lot to offer. So a lot falls under that. Whether you're, you know, completing the action that you promised, whether you're being a cause in the change and in the matter and making sure you're doing something about it, and not just, you know, sitting back and watching people deal with it. So that's also ethics for us. Whether you're, you know, making sure that you're here on time, whether you're dressed in the way that you're supposed to be dressed, all of that comes under ethics.
ऑफ कोर्स द लार्जर थिंग्स कि आप अपनी चीजें सही ढंग से कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, all of that is there, this the world knows, but for us every smaller detail also, that अगर आपने कुछ अपना कमिटमेंट दिया है, any word, so you stand by it. I बट think व्हाट that is हैपेंड ethics. व्हाट हैपेंड गरिमा जी, जब कोई एम्प्लॉय अपने स्टार्टिंग फेज में होता है, व्हेन सपोज अ टीम मेंबर ऑफ सेल्स, दे आर इन देयर स्टार्टिंग फेज, आप उन्हें अपनी ग्रोथ को भी देखना है, प्लस अपने करियर को भी देखना है, फाइनेंशियल ग्रोथ को देखना है, प्लस करियर को इन अ मील वाइल, और एस्पिरेशंस, यू नो, आप हर पर्सन की बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है। अब उन एस्पिरेशंस के साथ में उसका एथिकल होना, सम टाइम आई थिंक वो कुछ ना कुछ हो सकता है, कभी अपने किसी एम्प्लॉय से ऊपर जाने की कोशिश करे, उसको प्रेस करे, एंड देन वो अपने आप को ऊपर दिखाए। बहुत छोटी छोटी चीजें जो एम्प्लॉयज करते हैं। सो क्या ये हमारे लिए ये फाइंड आउट कर पाना इजी होता है कि इफ somebody is pressing someone और coming, होता है ना किसी का काम दबा के। I get what you're saying, and touch wood that यहाँ ऐसा है नहीं, because we are so transparent in everything that we're doing. We are very open. मतलब यहाँ कोई घबराता नहीं है कुछ बोलने से पहले, उनको पता उनकी बात को सुना जाएगा, और मतलब whether it is for you or against you, you will be heard, and of course only then anything will happen. Plus, I think this sort of culture also develops in certain organizations where ethics are not flowing properly from the top. In an organization where ये कमिटमेंट है कि आपकी सैलरी लास्ट वर्किंग डे पे आ जाएगी, चाहे वो 30th हो या 31st हो या 29th हो या 28th हो, और घर जाते उससे पहले मैसेज आ जाता है कि सैलरी आ गई है, जहां आपका अप्रेजल साइकिल फिक्स्ड है और 28 मार्च को आपका अप्रेजल लेटर आपके हाथ में होता है। सो आई डोंट थिंक आपकी वरी उतनी होती है। प्लस ग्रोथ को लेके भी वी आर वन ऑर्गेनाइजेशन जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हमारे लोग ग्रो करें, एंड वी इन्वेस्ट अ लॉट इन आवर पीपल। तो हम उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स कराएंगे, खूब अपस्किलिंग पे ध्यान देंगे, एंड वी फॉलो अ क्वार्टरली प्रोग्रेस रिव्यू, जहाँ पे हम उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। वो होता है सेल्फ पे, देन उनके रिपोर्टिंग मैनेजर, एंड देन द नेक्स्ट पर्सन इन लाइन जो उनका बॉस है या मैनेजमेंट है। एंड वहां पे भी सो आप सेल्फ को भी तो मार्क्स दे रहे हो, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर भी दे रहा है, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर भी दे रहा है, एंड देन द एवरेज इज टेकन आउट, राइट। सो वहां पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, अगर मार्किंग में कोई दिक्कत है या आपके पियर ने कैसा आपके लिए क्या कहा है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इसको क्वार्टरली करने का फायदा ये निकलता है कि आपको हर क्वार्टर पता होता है ये मेरा स्कोर है, तो अगर मुझे ग्रो करना है तो मैं इन्हीं पे ग्रो कर सकता हूँ। एंड व्हेन वी आस्क देम फॉर द मार्किंग, इट्स नॉट जस्ट योर KPIs, of course it is a part of it, but the two other important things is that you get marked on your core values also, and you get marked on your new skill set learned। तो आपने कितनी नई चीजें सीखी और कितना वैल्यूज को साथ में लेके चले, इस पे भी मार्क्स दिए जाएंगे। okay, that's so great. all of that, so every person is given an equal opportunity to actually grab and grow। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को नहीं एफर्ट डालना है और मिनिमल इंक्रीमेंट लेना है तो मुझे मिनिमल मिलेगा, बट इफ आई नो एंड यू नो एट द एंड ऑफ एवरी प्रोग्रेस रिव्यू आपका मैनेजर आपके साथ बैठ के बात करता है कि बेटा ये स्कोर आया है, इस वजह से आया है, इसको ऐसे बेहतर करोगे तो आगे improve हो जाएगा। Correct. So by the end of the year your increment can be better, you get a better appraisal, and that is how it works। So everyone has an equal opportunity to grow। मैं अगर full hard work डाल दूंगी, full values के साथ काम करूंगी, तो मैं टॉप इंक्रीमेंट भी लेके जा सकती हूँ। देन इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। वो ऐसा नहीं है कि यार इसने तो मेरी बुकिंग चुरा ली और इसने तो ये कर लिया और वो कर लिया, एंड एनीवेज अगर कोई वैसा कुछ कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो एथिकल है ही नहीं। एथिकल है ही नहीं। तो और इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने के बाद व्हाई नॉट टू बी एथिकल? एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स अमेजिंग। एंड वन मोर थिंग, like
you are a very big group, we can say. It's not a small organization. You are dealing with more than 300 plus people here. बट जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वी टॉक अबाउट द स्मॉल, जहाँ पे 50 लोगों की टीम है या कुछ है, वहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स दे कैन फॉलो, जिसमें वो मिनिमम में भी एक बेस्ट कल्चर दे कैन क्रिएट, व्हाट एडवाइस यू वुड गिव देम? So see, I think till 2 years, 3 years back, we were a team of 50 people only. We would easily accommodate in our conference room upstairs, and everybody would sit. But now we've grown bigger. In Shubhashish, we've got around 300, in BKJ 500, and by the end of this year, probably 1000. Great. So how you can maintain that culture, I think उसमें ये difference नहीं है. हम जब 50 लोग की टीम थे तब भी ऐसे ही बिहेव करते थे. आज जब 300 and 500 की टीम है तो भी वैसे ही बिहेव करते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं ना आदत डाल लेनी चाहिए तो फिर मुश्किल नहीं आएगी. तो हमने तब से आदत डाली. ऑफ कोर्स तब बजट वाइज थोड़े कम थे, अभी बजट बढ़ गया है तो थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा कर पाते हैं. बट कल्चर बिल्ड करने के लिए यू डोंट एक्चुअली नीड दैट सॉर्ट ऑफ एन इलेबोरेट बजट, बिकॉज माना आप अपने लोगों को, ठीक है, आप अब जैसे हमारी टीम ने लास्ट ईयर टारगेट अचीव किया तो बजट अलाउ कर रहा था खूब अच्छा, क्योंकि किया एक्चुअली जेन्युइनली. तो सबको फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब लोग बैंकॉक गए और दुबई गए जस्ट फॉर इंजॉयमेंट. तो था 50 लोगों की टीम में उतना नहीं था, बट ठीक है, पिकनिक कर लेते थे, ऑफिस में बैठ के समोसे खा लेते थे, आइसक्रीम खा लेते थे, उसको एंजॉय करते थे. तब वो फेज था. एंड अगर वो भी नहीं है, आप और छोटी टीम में, यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन ऑल ऑफ दिस आल्सो, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज जस्ट एडेड, वो होता है ना एडेड सर्विसेज जैसे, वैसा है. कल्चर के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही कल्चर के लिए वो पोस्टर्स इम्पोर्टेंट है. छोटी छोटी चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है. कि किसी को थैंक यू बोल देना, करेक्ट, किसी को वेल डन बोल देना, करेक्ट, किसी को प्यार से समझा देना, करेक्ट. आई थिंक दैट इज व्हाट बिल्ड्स योर कल्चर, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बोलने के तो पैसे ही नहीं लगते. तो और किसी को सुन लेना, करेक्ट. I think that is also very important for a good culture. Yes. And all of that is absolutely free of cost. Amazing. That's fantastic. So, the conclusion is like बड़ा बनने के लिए जब आप छोटे हो तब से ही perfect habits आप build करो. Perfect I would not say, because aim करोगे अगर perfect बनने की ना तो बहुत दिक्कत आएगी. 80% कर लोगे तो सॉर्ट हो जाओगे. बिकॉज अक्सर लोग परफेक्शनिस्ट के चक्कर में ना मेन काम भूल जाते हैं. सो एंड कल्चर इज समथिंग दैट परफेक्ट कभी हो भी नहीं सकता. आज ये इतने सब पहनने के बाद भी मुझे पता है कि मेरे पास बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. अगर रैंक 29 पर तो 1 पे कैसे जा. तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहेगा. एंड I think इसलिए perfect I would not say, nice. But हाँ, good, best, better, in that world, yes. Amazing, great, fantastic. I think ये conversation keep on चलता रहे. Absolutely. Good. Okay. I should ask you, अभी यहाँ पर कितनी hirings open है? I think people will be love to join your organization. Oh God, really? I mean, we are constantly hiring right now because we are expanding in a major way. There are projects coming up in Indore and in Prayagraj and in Jaipur, of course. And of course, BKJ is expanding every day. So exact number of count तो बहुत ज़्यादा है, but if anybody is actually genuinely interested, everything is there on our LinkedIn page, so they can just go and search. And even if nothing of your particular profession is open, they can always just drop a mail to the HR, and we make sure to respond to people. Oh, great! And I will share this hiring link in my video also. Thank you. So people will approach. Being so sweet. And what we do when after all the happy environment and value rich culture, if somebody wants to leave you, how you behave with them? So ऐसा होता है, of course लोग छोड़ के आपको जाते हैं, and most of the time it is
that they're getting a better opportunity somewhere. एंड जो मैंने पहले भी मेंशन किया दैट वी ट्रूली वांट आवर पीपल टू ग्रो, तो हम किसी को उस वजह से रोकते नहीं है, वी बिकॉज जो एक बार हमारे परिवार का हिस्सा हो गया वो हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा. सो वी डोंट स्टॉप देम, वी विश देम ऑल द बेस्ट. हम रादर वी सेलिब्रेट ऑल आवर फेयरवेल्स, वी मेक श्योर कि हम उनको अच्छे रेफरेंसेस दें, उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें. मे बी where they're going, wherever they're going, वहाँ पे if they need any help from us to put in a good word for them, so we do all of that. We don't stop people because हमारे लिए ultimate goal है to contribute to people's lives. and अगर वहाँ पे better opportunity है and that person thinks कि नहीं मेरे को वहाँ मैं better suited हूँ, so we don't mind that at all and we are absolutely at peace with that. and we'll honestly, हमारी जितनी भी फेयरवेल्स होती हैं they're very happy celebrations. Of course you tend to get emotional at farewell, so that little bit of crying is always there, but otherwise it's a very happy affair. There's a cake cutting, there are snacks that are given to everyone, and it is actually genuinely celebrated कि भाई ये इंसान जा रहा है हमें छोड़ के for a better thing. So we are absolutely all up for that. Great. So like somebody is leaving, then too they will not feel bad. Yes, और हम तो celebration का कोई मौका नहीं छोड़ते. So if some young entrepreneur asks you like how I should make my company a culture rich, what you will suggest him? I think the easiest thing to advise is that be who you are, be your authentic self. क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक हो तो वैसे भी हर चीज इन लाइन आएगी एंड लोग ऑनेस्टली देख के सीखते हैं. आपकी एचआर पॉलिसीज अगर मैं आज अपने पेपर पे बहुत ही सुंदर इलेबोरेट बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज बना दूं, लेकिन उनको एक्चुअली अपने बिहेवियर में नहीं लेके आऊं, अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आऊं, तो फिर मेरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता उस बात से. They will not value the paper, they will value the practice. So practice who you want to be, practice what you preach. I think that's my advice. Oh, great. Thank you so much for the lovely conversation and speaking so good thing about the values and the culture and entrepreneur as a company owners, as a HRs that should follow in their workplaces. Thank you so much. Thank you so much. Honestly, I had a lot of fun just talking to you. And I think I really hope that, through this podcast and the conversation that we've had, if it really just inspires or, changes anything for even one person, I think, our job is done there. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you so much for having me. मुझे पूरी उम्मीद है कि लिसनर्स को आज के एपिसोड से बहुत सारी प्रैक्टिकल लर्निंग मिली होगी और शायद ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में एक नया प्रोस्पेक्टिव भी. दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे आप अपने एचआर फ्रेंड्स, कलीग्स, फाउंडर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कल्चर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक बेटर सोसाइटी को भी बनाता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए स्टे अलाइन्ड एंड कीप ग्रोइंग.